Hello. Yes, we are live. मेरी आवाज साफ आ रही है? Are you able to hear me clearly? You should be able to see me quickly as well. But how many of you tried the homework question? There were a few people who gave responses. It was really cool actually. Everybody who responded, you should see me right now, was right in the homework question. So excellent work on that. Yeah. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के आइडियाज. Yeah. And yeah, let's get started. Hybridization. So, yeah, how did it, by the way, आवाज साफ आ रही है? Are you able to hear me, see me clearly and all of that? Just checking that off, checking those boxes off before I get into the session all the way, right? चलो, let's get started right away. Yeah, homework में हमने क्या क्या बोला था? एक मिनट. Is this not live? This is weird. एक second. It's live, right? Huh. It's saying this event will begin. This is very strange. On my phone, it's saying event will begin. Are you guys able to hear me and see me right now? Just quickly checking it, yeah? Okay, yeah, it is live. Okay, sweet. Say thank God. I'm like, भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है, cool. Yeah, good evening, Vicky. Thank you. Oof. I thought कि कुछ bug था कि भाई कुछ काम ही नहीं कर रहा है. So I'm trying better settings. I hope it doesn't lag for you now. Pranam, Mallavaji, how you doing? New faces, good to see all of you. What were the quick homework questions? There were a couple of homework questions, yeah, that the ones who answered, Stuti, Raghavendra, and Shridula, they all said B. Do you agree with these guys or what do you think? Hey, Umar, how are you doing? A lot of new people. That's awesome. That's awesome. Yeah, we're on the right channel. We're on the NEET channel, right? In the protonation of H2O, changes occur in the. So you're trying to add H plus to water molecules. And what you get is H3O plus. So in this species, comparing H2O and H3O plus, let's say 1 and 2, what changes? That's what's being asked for. Hybridization, shape of the molecule, hybridization and geometry, yani ki shape, both, or nothing. What do you think? Good evening, Lavanya. How are you doing? See, I'm back on the NEET channel as requested. हम कभी गए नहीं थे लावण्या जी. Well, it's very nice of you to check out the JE video. That's very cool. Hey, good evening, Mallava. You want to try this question out? What do you think the answer to this question is? Stuti, Raghavendra, and Sridula, all of them said B. I'm starting with the homework question and we'll get right into the session right away in a couple of minutes. So, when you go from water to H3O plus, क्या होता है? Umar is saying C, okay? Let me put Umar down as C. What do the rest of you think? So, when you do this, by the way, आवाज साफ आ रही है? Able to hear me and see me clearly? Yeah, all that's good. Okay, Lavanya also saying C. Okay. See, hybridization in both the cases is sp3. How can I be so sure? See, oxygen has 6 valence electrons. Okay, if it has 6 valence electrons, out of these, you have how many lone pairs and bond pairs? Initially, in H2O, you have 2 bond pairs and 2 lone pairs, right? This is in H2O. What about H3O plus? In H3O plus, you have 3 bond pair and 1 lone pair. Dekho, in both cases, you have 4 of these guys, right? 4 electron pairs that form bonds or don't form bonds, whatever it may be. But the total number of electron pairs is 4. So, in both cases, it's going to be sp3. But the shape changes, yeah? For water, it is bent, and H3O plus very clearly is going to be this kind of a shape. You've got this right here, okay? Pyramidal. है ना? Right? Oxygen in the middle. Yes? Good. So the answer, Vicky is saying A, okay? The answer is going to be the shape changes, okay? The hybridization does not change. Hybridization remains to be sp3. This is this way. This guy is like this, okay? Yes. All right. Cool. We good? Let's look at the next question. No doubt, right? This was a homework question. Ideally should have done it before, but it's okay. Nahi kiya to abhi. I hope you've understood. Okay. If you haven't, please tell me. I'm here to help you out. How many sigma bonds are present in ethane molecule? Ethane molecule. And again, Stuti, Raghavendra, and Shridhara have said B. Yeah, that's there on the chat on the last one. What do you think? Ethane. How do you count the number of sigma bonds? Remember, oh, Atishbadi, sunai di? Maybe sunai nahi di. The mic is really good. Maybe you did not hear that, but it was pretty loud, huh? C2H6. So, the way to do this, the best way to do this is to actually form the structure. Yeah. Have you guys started organic? आप लोगों ने खुद अपने आप से organic पढ़ाई शुरू की है? अगर नहीं भी की है, तो it doesn't matter. I've taught you this anyway, right? The number of single bonds is basically the sigma bonds, right? Single bonds are sigma bonds. And कितने हैं? यहाँ पर तो clearly 7 दिख रहे हैं. 3 here, 3 here, and 1.
So that's 7, right? अरे चैट कहाँ हुआ भाई, आप लोग आंसर नहीं दे रहे, मुश्किल लग रहा है क्या? I'm guessing the people on this chat did not attend the last session. Hey Poonam, right? If you did, then ये तो जल्दी हो जाता. Anyway, are you clear that the answer on this one is 7? Yeah, it's very straightforward. Ethane, not ethene. Okay, 3 here, 3 here, and 1 in the middle. So that's just counting teen, and 1. 7 sigma bonds. Yeah, all right. Yes, Omar. Okay, good stuff. Let's look at some more hybridization. We had looked at sp3 specifically, right? And now we're going to look at sp2, sp, and also some containing and some special compounds like ethene, ethyne, etc., etc. We will explore all of them. Okay, all right. बफरिंग हो रहा है, हाँ यार 6 बजे का ये प्रॉब्लम है, हमेशा बफरिंग होता रहता है, अब क्या करें? YouTube को हम पसंद नहीं है, YouTube फॉर सम रीजन डज नॉट लाइक अस, बफरिंग इसलिए होता ही रहता है, अब क्या करें? हमारा इंटरनेट कनेक्शन तो काफी बढ़िया चल रहा है, वी आर गोइंग एट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली हाई स्पीड, आई विल टेल यू द kbps, वी आर गोइंग एट 5600 kbps, yeah, that's the streaming velocity, excellent connection says YouTube, बट फिर भी आपको बफर नहीं करा रहा है, ये तो जो है YouTube नाइंसाफी कर रहा है, बट क्या करें? या YouTube does this, क्या करें? ठीक है, all right. Yadav, Aryan Yadav also saying B, good stuff. Let's look at the hybridization of BF3. BF3 यानी कि boron trifluoride. This is a common compound. I have shown you the shape of this compound already, right? मेरे सर के ऊपर है. From Vesper theory, we had figured that BF3 is trigonal pyramidal. Trigonal planar. But how do you get its hybridization? Okay, इसमें मालूम है 3 बॉन्ड बने हैं, 3 कैसे बनते हैं? देखो, there are 3 valence electrons. Okay, 3 valence electrons. You can see that very clearly. These 3. This guy, one of them jumps over here. Once it does that, you can clearly see कि यहाँ 3 electron है जो form कर सकते हैं. ठीक है? And hence, what you get is sp2. क्यों? क्योंकि 1s and 2p orbitals combined to give you the hybridized 3 sp2 orbitals. ये सब क्लियर है ना? अगर एक s और 2p कंबाइन कर रहे हैं तो मिल जाएंगे 3 sp3, sp2, sorry. Total number is 3, right? So sp2, 3 sp2, right? That's it. Now look at this. एक और एक्स्ट्रा चीज, यहाँ पे एक empty orbital भी है, तो यहाँ पे आ सकता है एक और f- और बन सकता है bf4-, बट उसका होगा स्ट्रक्चर क्या? This is going to be sp3 hybridized. ठीक है? I have asked you question on this also in the last session. अगर याद नहीं है तो प्लीज रिवाइज कर देना. खैर, this is the structure. Okay? Ta-da! sp3 looks like this. The angle is 120 degrees. So this plus, by the way, is in phase and minus is out of phase. We are not going to talk about this too much, right? This, ये plus or minus का क्या exactly मतलब है? But again, a reminder from what we did last time, it has to do with quantum mechanical ideas of orbitals combining. Okay, the wave functions of the orbitals combining. Wave functions क्या होता है? Probability of finding electrons. That is what is an orbital, right? Probability of finding an electron. खैर, I have told you this in the last session. अगर याद नहीं है तो please उसको revise कर लेना. Let's move on to the next idea. Yeah, trigonal planar. Yes. Shravani, yes, I know. YouTube की देन है, क्या करें? YouTube बाबा हमको बफर, हमको बैंडविड्थ नहीं देना चाहते हैं. बायजूस को क्या करें? आकाश बायजूस को. At 6 o'clock हर दिन ऐसा होता है. अब maybe I'll just change my session timing from 6 to another time. कोई और टाइम है जो आपको सूट करता है बताओ. We'll figure it out. Let's hope that this gets better, the buffering thing. To 1s and 2p. As I've told you, we are going at 5600 kbps. That's my buffering bandwidth. Yeah. स्टूडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है पूनम. यूट्यूब का प्रॉब्लम है. यूट्यूब बाबा हमको बैंडविड्थ नहीं देना चाहते हैं. You know, literally all हम स्टूडियो थोड़ी, मैं घर पे हूँ, and I have a 300 Mbps connection. I have a really really good connection. I have 2 connections in fact. So ये YouTube की दिक्कत है. YouTube नहीं देना चाहता है बैंडविड्थ. You check any video at 6 o'clock, it does that. Yeah, this is true. खैर, we don't, हम लोग फ्री में काम करते हैं ना. See, everybody else shows you ads. BYJU'S does not show you ads. The channel is not monetized. So we're not giving anything to YouTube, right? So maybe that's why. Khair, it doesn't matter. We will still keep trying our best. We'll give you the best sessions. ठीक है? अगर अभी नहीं समझा ठीक है, it's okay. बाद में देख लेना. कोई क्या प्रॉब्लम है? Anyway, we are teaching, right? It's all the same. Khair, sp2 was for bf3. Let's look at BeCl2. BeCl2, beryllium का ground state is 1s2, 2s2. Bring out the periodic table. Okay, for these ideas you need to know which element is where. थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. पहले 10 elements का तो होना चाहिए, right? So
यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक 2s जंप कर जाता है 2p में. सो नाउ यू हैव 1s and 1p orbital combining, so you get 2 orbitals. Okay, 2 orbitals, that's all you get. And look at this beautiful structure. Okay, this right here is beryllium with sp. You may not be able to see it very clearly, but देखो ये है negative वाला. Let me use a different color over here. This is the negative lobe, this is the positive lobe, so to speak. और ये होता है bonding में overlap, यहाँ पे बनता है ऐसा. ठीक है. So beryllium has one s and one 2p electron, and hence they combine to give you two sp hybridized orbitals. That's it. It's as simple as that. और इसका shape क्या होगा? It's going to be plain. It's going to be a linear compound. Look at this. Another one. Okay, another example of this sp hybridization is CO2. It's very interesting because CO2 में कार्बन देखो, कार्बन के पास तो थे 4 इलेक्ट्रॉन outermost orbit, outermost shell में, right? 2 1s2 and then you have 2s2 and 2p2, right? तो ये इसके 4 हो गए. तो और इसका ground state looks like this. But on its excited state, one electron goes there. Now, what is very interesting is only these take part in bonding. Okay, और ये है unhybridized p orbitals. मतलब कि ये दोनों फॉर्म करते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड. अरे ये क्या हो गया? 2 sigma bonds are formed, and these two form 2 pi bonds. This is very interesting. Okay, 2 pi bonds कैसे? ऑक्सीजन के साथ. Okay, with oxygen. Cool. So remember, when we talk about hybridized orbitals, we only talk about sigma orbitals. Okay, ये बहुत, we only talk about sigma bonds, not sigma orbitals. Sorry, you talk only about sigma bonds. Okay, ये बहुत जरूरी बात है. So CO2 looks very very interesting. Okay, it looks like this. ये जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, this is a sigma bond. ठीक है? Cool. I'm not showing you the pi bond in this, but we will look at the pi bonds when we look at ethene. हम लोग पाई बॉन्ड्स को डिटेल में देखेंगे. ठीक है? गुड इवनिंग मुदासिर. व्हाट्सअप. यस वैष्णवी, क्या करें? यूट्यूब बाबा की जय. दे डिसाइड नॉट टू गिव अस बैंडविड्थ. व्हाट टू डू? खैर, एसपी एंड मैं ओपनली बोल रहा हूं ताकि होपफुली समवन फ्रॉम यूट्यूब लिसन्स इन एंड भाई फिक्सेस इट, बिकॉज दिस हैपेंस वेरी ऑफन. क्या करें? खैर, शेप इज लीनियर. ओके, and what you've got is one s and one p giving you this. Remember, इसमें जो है सबसे जरूरी बात यह है कि कार्बन combines with both of these, but there is a double bond form. मतलब there is one sigma bond and there are one pi bonds. I know we haven't spoken about the pi bond, but we will. As the session goes on, हम लोग pi bond की भी बात करेंगे. ठीक है? Now, this whole summary of everything we have done so far, okay? Because I know last session में था sp3 किया था, कुछ किया था, तो whole summary of everything we have done so far, right? कैसे होते हैं orbitals combined? When they get formed, the larger lobe is what is used for overlapping. Why? Because this is in phase and this is out of phase. Okay, out of phase, in phase क्या? Similar to this whole idea of wave optics में आपने जो पढ़ा है, ठीक है? कि there are some like each of these orbitals can be given by wave functions. Okay, और wave functions जब add करते हैं, right? So there is 2s and 2p wave function को add करके बनता है psi sp orbital, right? ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर नीट, बट वी आर वंडरिंग ये लोब क्या है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. या दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाट दिस इज. ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो द लार्जर लोब ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन द बॉन्डिंग, व्हिच इज कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड. बहुत जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन में. यू ओनली टॉक अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स. कूल. You have s orbital plus n number of p orbitals plus some d gives you this sort of a thing. हमने अभी तक बस sp3, sp2 और sp देखा है, but you can also have sp3d, you can also have sp3d2 and sp3d3. इसलिए ये सब लिखा है. आपके सिलेबस में यहां तक है, right? You don't really have this in your syllabus, but it's okay. We can maybe explore it in short. Hey, yes, we meet again. Hey, perfect mix. Yeah. If you have any doubts, please let me know. But I think बस कहानियां चल रही हैं अभी तो, right? अभी तो कहानियां चल रही हैं. So, again, recapping everything you've done so far, ताकि सब चीज एक जगह आपको मिल जाए. These notes as always will be on Telegram. You can take them. You don't have to write anything down. बस सुन लीजिए. These orbitals, they can have a pair of electrons, they can be vacant, or they can have an unpaired electron. Okay, and all of these three can undergo hybridization. Vacant orbital का best idea मैंने आपको दिखाया था CO2 में, right? 2 vacant थे, but they get used in pi bonding. और BCl2 में भी 2 vacant थे. कुछ दे not take part in bonding. It's okay. कुछ भी चल सकता है, ठीक है? Anything can work. Okay. So there are no rules around that.
the promotion of electron is not really an essential condition for hybridization. Okay, orbitals go hybridization, not the electrons. Remember, it's the orbitals that are combining. Electron ki probability, finding the probability of electron, that is what this wave function means. Okay, so electron bhai sahab apni jagah pe hi hai. It's because these orbitals are very close in energy. They're like, let's combine. ठीक है, थोड़े theoretical ideas, but you have a lot of assertion reason questions in NEET. Okay, इसलिए ये सब जरूरी तो है आपके लिए जरूर. Okay, ठीक है. Yeah. This is again a bit of a repetition, so I'm going to quickly move on. Yeah, this is summarizing everything we have done so far. Orbitals present in the valence shell and the penultimate shell, मतलब कि जो 3D है, right? Say 4s and 3D can also combine. ये हम लोग देखेंगे later on. The bond formed by these hybrid orbitals is more stable than just the pure atomic orbitals. This I have not gone into detail, but the relative strength of say an sp3 is much more than just the s or s ka sigma bond or just the p ka sigma bond. Okay, the sigma bond formed by this, the strength is much more than that of just s or just p. Just s matlab this, just p matlab this, right? sp3 matlab this. Okay, yeah, we good? No doubts? Are you okay? कौन सी प्रॉब्लम पूनम? Oh, you mean questions? Yeah, sure, dude. पूनम, just wait for a few slides, तो question solve करेंगे. अविका. I know, right? क्या करें? YouTube की देन है. YouTube does not want to give us bandwidth. अब क्या करें? I hope they listen and because of which जबरदस्ती हमको उनको करना पड़े. We don't monetize, right? All our videos completely free. Everybody else monetizes their channels. Our channel is not monetized. ठीक है? For your benefit. खैर, anyway. Percentage S character की बात कोई पहले कर रहा था. Okay, what is percentage S character? It's the number of S orbitals divided by number of S plus P orbitals. आई? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर SP लो तो it's going to have 50% S character, 50% P character. Okay, and what is the point of this? Greater the S character, more ionic is the bond. Ionic? We will do this when we do Fajan's rules in the next session. ठीक है? We will look at what is covalent and ionic character, but this concept of percentage of S character is useful there. sp3 में percentage is 25 and 75. How do we get this? देखो यार, एक है S and 3 है P, right? So percentage S character is 1 divided by 1 plus 3, which is 1 by 4, which is 25%. Okay, cool. No doubts here, right? sp2 similarly is just 1 divided by 1 plus 2, which is 1 by 3, which is 33% S character. ठीक है? Just a little bit of theory that helps you do this. Percentage S character इसका सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका कम. You'll notice, and this is not done out of randomness, you'll notice that this length is more than this length, is less than this length. I mean, it's more than this length. This length has to do with bond length. Okay, and bond strength. So this bond strength is greater. ठीक है? Percentage S character is directly proportional to bond strength. Bond strength मतलब, bond strength का क्या मतलब है? The amount of energy required to break a bond. ठीक है? Cool? Okay, that's it. चलो, last point, and बार बार इसको बोल रहा हूं, hybridization में only sigma bonds are considered. ठीक है? And yeah, the goal is to get minimum repulsion between electrons pair. This is the same as VSEPR theory, right? इसी का extension है. Extend this to this as well. Okay, hybridization also. All right, and hybridization तो आपको geometry में मिल जाती है, which we have explored in a lot of detail. The biggest problem, the biggest positive of VBT is that it told you how diatomic molecules are formed, like say O2, N2, etc. I have explained that in the last session. The problem is, limitation is कि भाई paramagnetic nature of O2 नहीं figure out हो पाया. Okay, paramagnetic मतलब it is affected by a magnetic field. It aligns itself. We'll look at that when we do MOT in a couple of sessions. Next Tuesday करेंगे उसको. And geometry or shape नहीं figure out हो पा रहा था properly of some molecules. Anyway, questions as Poonam ji wanted. Here it is. On hybridization of one S and one p orbital, what do you get? What do you get? Two mutually perpendicular hybrid orbitals or two equivalent orbitals at 180 degrees or four orbitals tetrahedrally. Three orbitals in a plane. 2, 2, 4 या 3. पहले नंबर फिगर आउट करना है. इफ यू फिगर आउट नंबर, उसके बाद डायरेक्शन फिगर आउट करना है. ट्राई इट आउट प्लीज. आगे सवाल. पूनम जी and everybody else who wanted questions, here we are with questions. Tell us.
what the answer is. What do you think? सवाल आ गया, बताइए. हेलो दोस्तों, बताइए. अरे गुड इवनिंग अक्षु, आंसर तो बताइए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? सी, दिस इज वेरी डायरेक्ट, राइट. एस है, पी है, तो दो ही होंगे, तो यू कैंसिल आउट 3 and 4. पूनम कहां गायब हो गई? सवाल चाहिए थे, सवाल आता है, सब सब लोग गायब हो गए. खैर, इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन, इट्स ऑल राइट, नो बिग डील, राइट. यू गॉट टू ऑर्बिटल्स फॉर श्योर, दे आर टू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर. क्या मतलब? ऐसे थोड़ी ना ऑर्बिटल. इट इज गोइंग टू मिनिमाइज रिपल्शन, हेंस दिस मेक्स सेंस. ओके. S and P मतलब कि you've got a central metal or central atom here, say carbon or whatever, just say some X over here, and there Y or this. So obviously this is going to happen and not this, because repulsion is there is a lot more. This is 90 degrees. That doesn't make sense. This is 180 degrees. So this makes a lot more sense. B should be the right answer. B should be the right answer. Vaishnavi, excellent work. Poonam ji, come on yaar. Mutually perpendicular कैसे होगा? अगला सवाल. Which of the following pairs is isostructural? They have the same shape and hybridization. Same shape and hybridization. इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है. ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो. What do you think on this one? Poonam, it's okay, it's okay. Don't worry about it. Don't worry about it. अभी पता चल गया ना? It's okay. Don't worry about it. How do you think this one's going? इस वाले कैसे ट्राई करें? Or is it because the stream is being a little random? That's okay. Don't worry about it. फिर भी I'll give you enough time to solve it, right? Which of the following pairs is isostructural? Same shape and hybridization. Shape और hybridization में क्या फर्क है? देखो, अगर पानी है, right? पानी, इसका शेप हो गया बेड, बट हाइब्रिडाइजेशन में you will draw all of these guys. Okay, so this is going to be sp3, यानी कि tetrahedral. Okay, this is hybridization. Whoops, क्या spelling है भाई? Brilliant. This is shape. Okay, Poonam saying A on this one. Okay, Poonam. What about the rest of you? Anybody else wants to take a shot at this one? Vaishnavi, anybody else? Akshu, yeah. So here's the deal. Let me draw A for you. A कैसे दिखता है? Same shape and hybridization. तो मैंने यहाँ पे for your benefit hybridization draw किया है. और hybridization से अगर आप lone pair हटा दो, basically you remove hybridization से lone pair. Okay, so remove LP and you get shape. तो इसमें ये हटा दो तो शेप तो सेम नहीं हुआ. See, this is going to be, what is this? This is pyramidal बोलते हैं ना इसको, pyramidal, and this right here is trigonal. So this is not going to be the right answer, है ना? पूरा, you see that? Why this is not going to be the right answer? I have drawn NF3 और NF3 में एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है नाइट्रोजन के ऊपर. 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है. अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, प्लीज रिवाइज पहले सेशन में हाउ आई टोल्ड यू कि भाई कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, हाउ डू यू डिसाइड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर, सेकंड सेशन में, है ना? इस हिसाब से, ठीक है. वैष्णवी सिंह सी, ठीक है. हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, एक करके देखते हैं. What about this? BF4 माइनस, मैंने F और वो सब नहीं ड्रॉ किया, तुम लोग कर लेना, साइड आइटम्स में ड्रॉ कर लेना, ठीक है. ओनली केयरफुल थिंग यू हैव टू डू इज कि एवरी टाइम यू ड्रॉ एन आयन ना, ड्रॉ स्क्वायर ब्रैकेट्स. बोर्ड्स में जरूरी है ये, कहीं पे भी, जस्ट एज अ मैटर ऑफ एटिकेट, राइट? व्हेन यू ड्राइंग आयंस, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव डाल दो, दैट्स ऑल, ठीक है. नाउ BF4 माइनस, आप बताया था आपको, BF3 में एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, F4 F माइनस आ गया वहां पे, है ना? तो दिस इज, ओ ये तो सेम लग रहा है, ये दोनों सेम लग रहा है ना? देखो, शेप भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है ना? दोनों sp3 है और दोनों है टेट्राहेड्रल, तो यही हो गया आंसर. आई फील दिस शुड बी द राइट आंसर. वील जस्ट सी द अदर टू. मुझे तो लगता है ये आंसर होना चाहिए. BCl3 एंड BrCl3, देखो बिल्कुल ही अजीब चीज कर रहे हैं. BCl3 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? दिस सेम एज BF3, सिमिलर टू BF3. व्हाट अबाउट BrCl3?
This is the same as ClF3. Like ClF3 was T shape, है ना? कैसे? क्योंकि देखो B नहीं है, ब्रोमीन होना चाहिए, राइट? ब्रोमीन में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. राइट दैट डाउन बिकॉज उसमें डाउट है, लग रहा है सी आप लोग कुछ बोल रहे हैं ना. देखो यार, ब्रोमीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इफ इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ऊपर कोने में लिखा है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड पेयर्स. तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना? और ये इक्वेटोरियल प्लेन में लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ये हमने बहुत डिटेल में किया है दोस्तों. प्लीज रिवाइज दिस. या यू विल सी इन द डिस्क्रिप्शन. आई हैव गिवन यू लिंक्स टू द अर्लियर सेशंस आल्सो. दिस सेशन नंबर 5, राइट? सेशन 3 में शायद इसको किया था, VSEPR जहां पे भी किया था. वी डिड दिस इन सो मच ब्यूटीफुल डिटेल फ्रॉम जेडी ली, है ना? दिस इज टी शेप, तो ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते, है ना? ये टी शेप है और ये ट्रायंगुलर है. नॉट द सेम, नॉट द सेम, है ना? चलो NH3 एंड NO3 माइनस देखते हैं. NH3 अमोनिया लोन पेयर है, इसको हटा दो, ये तो नहीं होगा ना. सो both of these, नहीं, ये तो नहीं है, तो there is no way, right? This is pyramidal is a shape and this is triangular. क्या बोलते हैं उसको? ट्राइगोनल प्लेनर. लेट मी राइट दैट, ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, कूल. सो बी शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी. वैष्णवी, पूनम, आर यू गाइस ओके? हाउ दिस इज बी? थोड़ा मुश्किल सवाल था, है ना? इसलिए इतनी घोचा पोची हो रही है ऊपर नीचे. डोंट वरी, सवाल सही होता है, गलत होता है, डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट कीप ट्राइंग एंड हैव सम आइडिया इन योर माइंड कि क्यों है ये आंसर, एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. अगर वो नहीं था फिर आंसर बदल दो, उसमें क्या है? दिस इज लर्निंग एक्सरसाइज, राइट? आर यू गाइस क्लियर हाउ बी इज द राइट आंसर? या sp3, let me use a different color to highlight it. sp3 tetrahedral, hence this should be correct. Okay, shall we move on? एक और सवाल देखते हैं. When the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 to sp, the angle between the hybridized orbitals, क्या होता है एंगल को बताइए, of the hybridized orbitals? Decreases considerably, increases progressively, decreases gradually, all of these. Yeah. What is all of these? all of these हटा दो. all of these नहीं है, all of these नहीं है. Hey unknown one, welcome. Please try this question. जितनी बार बफरिंग का इशू होता है ना, टाइप करो. What we do is we analyze these comments post the session. अगर आप लोग 10 बार बफरिंग का इशू 10 बार डालो, then I'll go take it to YouTube saying भाई ये क्या है, give us more bandwidth. Yeah, we will actually do that. We will, because we have a pretty big following on YouTube, so we will get in touch with them and we'll tell them, look, students are facing a buffering issue and I have proof of that. Our infrastructure is good. We have good proof of that. So we'll go to them. Every time you face any buffering issues, please comment में डालो, 100% डालो, 100 बार डालो, जब भी होता है. अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. Poonam is saying A. Okay, sweet. Poonam is saying A. Unknown is also saying A. Okay, ठीक है. Decreases considerably. Are you sure? sp3 to sp2 to sp, ये 3 चीजें हम लोग कर रहे हैं. ओके, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचिए. व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इफ यू डू दैट? थोड़ा सोचना पड़ेगा. I'll give you some time to do this. Okay, let me draw sp first. Okay, because that's the easiest to draw. आंसर बदल दिया बिकॉज मैंने बोला सोचना पड़ेगा. वैष्णवी says C. Okay, मेधा, welcome मेधा. मेधा says B. ये कंसिडरेबली और ग्रेजुअली तो बहुत अजीब शब्द है. अंग्रेजी क्यों कंसिडरेबली ग्रेजुअली, क्या है कंसिडरेबली ग्रेजुअली? ठीक है, देखेंगे, विल सी. सबसे आसान वाला देखते हैं पहले. दिस इज sp, राइट? 2 सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, एंगल है 180 डिग्री. नेक्स्ट वाला ड्रॉ. सबसे आसान पहले ना, इजीएस्ट स्टेप फर्स्ट. नेक्स्ट वाला है sp2. ओके, 3 सिग्मा बॉन्ड्स. कौन से 3? 1, 2 and 3. And you see that the angle is reducing. But angle is reducing when I go from sp to sp2. उल्टा पूछा है तो मतलब आंसर मस्ट बी इंक्रीजिंग. देखो sp3 भी ड्रॉ कर दिया, ये तो क्लियर है. sp3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 दिख रहे हैं ना, 1, 2,
3, 4. Right? Yeah? Thank you. Keep putting. जब भी buffer होता है ना, डालते जाओ. Yes, Medha, absolutely right. Good work, Medha. You see that? 109 degrees 28 minutes, 120 degrees and 180 degrees. इसमें increase कर रहा है. ठीक है? All right? Shall we move on? Increases gradually should be the answer to this one. Okay, sweet. The hybridizations of atomic orbitals of nitrogen in NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus respectively. ये तो नीट 2016 का सवाल है. I have already asked you. I have a feeling I have already solved this question. खैर फिर से कर लेते हैं अगर किया तो, बट मे बी नहीं किया होगा. ट्राई करके देखो इसको. अगर बीच में थोड़ा बफर होता है ठीक है, मतलब बफर होता है होने दो. Are you able to follow what I'm saying or not? If you're not able to follow what I'm saying, spam on the chat. If you're able to follow, great. ठीक है. Follow मतलब इतना अटक रहा है कि भाई आवाज ही नहीं समझ आ रही है. Yeah, then डालो. Okay, Poonam says C. Poonam is going with C. Okay, all right. Anybody else wants to take a shot at this or shall I explain this? Try करिए. Medha also saying C. Okay. Vaishnavi also going with C. All right, sweet. So we have 3 C's. Must be C ही होगा आंसर. चलो ड्रॉ करते हैं. Let's draw them one by one. And I'm not drawing the O's and the H's. Okay, वो तुम लोग कर लेना draw. I am drawing the double bond, single bond, but you write it down. NO2 plus looks like this. Okay, there are 2 sigma bonds. So this must be sp. Okay. NO3 minus, remember when you're drawing ions, make sure you put the bracket plus minus लिखो. मैं ऐसे जल्दी में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज ये मैं कितनी बार कर चुका हूं. आई हैव डन दिस सेशन 4, सेशन 3, सेशन 2. प्लीज अगर ये नहीं समझ में आ रहा है वो सेशन देख लो. बहुत प्यार से वहां पे समझाया. ठीक है. वाई इट कम, ऐसे क्यों होता है. नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीजें की है वहां पे. ठीक है. बट सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके, है ना. तो दिस इज sp2. Lastly, NH4 plus so is very common. 4 sigma bonds and sp3. Good job. आसान था सवाल. Excellent work. Unknown. Yes. Good going. Another one. The hybridization of S. ये वाला है interesting. The hybridization of S in SO2 is sp, sp2, sp3, dsp2. dsp2 मैंने पढ़ाया नहीं आपको. जब मैंने पढ़ाया नहीं तो इसके होने के चांसेस कम है. ठीक है. लेट्स स्कैम दैट. थोड़ा स्कैम कर लेते हैं. मैंने नहीं पढ़ा आपको व्हाट इज dsp2 अभी तक, तो नहीं होगा शायद. मोस्टली नहीं होगा. राइट. Hey Sandeep, how you doing? If it's related to this question, ask me. If not, then please ping me on I Teach Chem. I will try and help you out best I can on Telegram or on Discord. ठीक है. Let's keep discussions on this chat relevant to this session. ठीक है. All right. Good. Sandeep saying B. What do the rest of you think? Sandeep is saying B. Thank you Sandeep for that. छोटी छोटी चीजें लिख दे हम लोग. आप ट्राई करो. थोड़ा हिंट देता हूं. सल्फर में कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन को कितने चाहिए? ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स to complete its octet. How will it do that? It must form 2 bonds. So each oxygen will form 2 bonds with sulfur. So 2 oxygens will form 4 bonds with sulfur. 4 कौन से bonds? 2 sigma, 2 pi bonds. है ना? 2 sigma, 2 pi bonds will be formed by oxygen. Okay. So you have 2 sigma, 2 pi bonds, but I am only considered about sigma bonds. तो इसलिए मैंने लिखा है कॉन्फिडेंटली 2 बॉन्ड पेयर. ठीक है. तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वहां चले गए. बचे कितने? 2 और. एक और मतलब 2 और बचे, which means कि एक लोन पेयर बचा, which is the same as 2 electrons. Right? I'm going to write I Teach Chem again over here somewhere. ठीक है. What do you think? Does this help you? क्या होगा आंसर? संदीप लेंगे क्यों नहीं लेंगे? अभी थोड़ा लोड बढ़ गया है संदीप, टू बी ऑनेस्ट. आई हैड टू स्प्लिट माय टाइम बिटवीन द जेई चैनल एंड द नीट चैनल, बट डोंट वरी, वी विल गेट द नंबर ऑफ क्लासेस बैक अप वेरी वेरी सून.
सब लोग दिवाली की छुट्टी पे चले गए थे, बस हम ही हैं जो छुट्टी पे नहीं थे, तो जितना कर पा रहे थे हार्ड वर्क बॉय, हम भी हार्ड वर्किंग है। नहीं, इट्स ओके, आई लिव इन बैंगलोर यार, यही मेरा घर है। यस, सो हरप्रीत, व्हाट्सअप, व्हाट डू यू थिंक? अननोन इज सेइंग ए, मेधा इज सेइंग ए, ओके, इस ये वाला या लास्ट वाला? मेधा इज सेइंग ए, okay, hard work boy said B, Vaishnavi also said B, okay, but thanks for the feedback here. I'll pass this on to my team and I'll try and do as many sessions like before with you guys. We will try and do that. ठीक है? Yes, unknown, क्या करें? YouTube को चलाइए, go shout at YouTube because I have a really good connection, 56 78 56 64 kbps. So Harpreet is saying, see, Mrinal to yaar, he had a kid yaar, Mrinal cut him some slack. He had a very tiny baby girl and he's on paternal leave. He's back now from Diwali. He should take sessions soon. Poonam is saying SP2. Okay, sweet. All right. ठीक है, मैंने आपको काफी बताया, टाइम पास ही काफी बातें होंगे. Let's get back to the point. पूनम is saying B. अच्छा, C बोल रही थी आप पूनम? Okay, पूनम says B. ठीक है, all right. So I've given you a lot of information to think about, right? Now let's just put it on paper. देखो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये हो गया लोन पेयर. तो 3 हो गए हमारे, व्हाट यू कॉल इट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एलपी प्लस बीपी. मतलब दिस इज गोइंग टू बी sp2. एक्सेलेंट वर्क. या इट इज गोइंग टू बी बी. हरप्रीत सिंह जी, आपके नाम में तो हैप्पी है, हैप्पी रहिए. काहे नोबो बुला रहे हैं लोगों को? हैप्पी रहिए. B is the right answer, sp2. Okay, let's go ahead. बहुत टाइम लगाया उस पे, I hope you understood that. Let's look at some compounds, special compounds. Special मतलब कि NCERT में है तो special बुला लेते हैं. That we'll explore in a little bit of detail. Ethane. Why is ethane special? It has 2 carbon molecules. Okay, and both of them are hybridized. And this is something that you are going to find most useful when you do organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है. मोस्ट अगर जो है 4, मतलब फर्स्ट थिंग, ऑल कार्बन नीड टू हैव 4 बॉन्ड्स, राइट? श्योर. उसके बाद अगर उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो होगा टेट्राहेड्रल. अगर उसमें एक डबल बॉन्ड आ गया भाई, देन थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग. देन द कंपाउंड बिकम्स प्लेनर. या फिर उसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और वो बन गया कार्बोकैटायन बन गया, तब भी इंटरेस्टिंग चीज होंगी, तब भी उसका बन सकता है प्लेनर, तब भी उसे अटैक हो सकता है इधर से उधर से. दैट्स व्हाई प्लीज पे अटेंशन. नाउ वी आर डूइंग थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द होल ऑफ ऑर्गेनिक फॉर यू. ठीक है? सो इथेन में क्या होता है? C2H6 ग्राउंड स्टेट, 1s2 2s2 2p2. ठीक है? यू नो दिस. ओ, तो दिस लुक्स वेरी फेमिलियर. इसमें कुछ नया तो नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं लग रहा है. देवर 4 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी 4 ही हैं. एक भाई साहब जंप कर जाते हैं एंड ये बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp3. ओके, फिर नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि दोनों, both of them have, sigma bonds being formed. So both the carbons, say let's say carbon 1 and carbon 2, दोनों कार्बन में है sp3 hybridized. That's what makes this so interesting. Okay, and this is how it looks like. So there are 3 sp3s sigma bonds, यानी कि इस स्टाइल के. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज sp3s sigma bond. ओके, एंड 1 sp3 sigma bond. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, हाउ डू आई ड्रॉ दिस? लेट मी थिंक दिस थ्रू. आई विल डू दिस. एक सेकेंड. सो इफ आई ड्रॉ sp3 इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस एंड लाइक दिस, है ना? या, दिस मेक्स सेंस टू मी. कूल. ठीक है भाई. संदीप, सेशन पे ध्यान दो, बताया तो मैंने. और कितना आंसर चाहिए आपको? शेख, डबल बॉन्ड sp2. ओके, यस, गुड स्टफ. लेट मी जस्ट कैच अप ऑन द चैट. लेट्स कीप इट टू द पॉइंट. या, ओके, सो what this looks like would be this. Okay, so these are sp3s sigma bonds and there are 6 of them. It's easier to understand with this diagram, right? sp3s sigma bonds, and these are sp3 sigma bonds. NEET could ask you question on this. ये may be clearly दिख नहीं रहा होगा because of the way this is, right?
दिस इज व्हाट इट इज। एंड यहाँ पे बहुत छोटा सा एक नेगेटिव व्हाट यू कॉल इट आउट ऑफ फेज भी है, बट दैट डजंट बॉन्ड। रिमेंबर, ये बड़े लोब्स, ऑल ऑफ दीज बड़े लोब्स बड़े लोब्स आर ऑल इन फेज, ओके, तभी ये कर पा रहे हैं बॉन्ड। जो आउट ऑफ फेज वाले स्मॉल पार्ट्स हैं, तो नेगेटिव वंस आर नॉट इवन बीइंग शोन ओवर हियर, ठीक है। बट मैं एनीवे ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, बिकॉज द होल ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल लुक्स लाइक दिस, ओके। जस्ट लाइक वो दंड बैठक नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वो बड़ा सा वो पहलवान लोग उठाते हैं ना, दैट बिग थिंग, इट इज लाइक ह्यूज, गॉट अ ह्यूज थिंग ऑन टॉप एंड लाइक अ छोटा थिंग टू होल्ड ऑन, so it looks like that, ठीक है। ऑल राइट, यू आर 11th, दैट्स ग्रेट शेख, दैट्स ग्रेट, कूल। पूनम जी, बफरिंग का सॉल्व प्रॉब्लम तो यूट्यूब जी सॉल्व करेंगे, यूट्यूब से बोलिए अब क्या करें, ठीक है। ethane has sp3 hybridization on both the carbon atoms, okay, and this is how it looks like when they come together. Let's look at ethene. Ethene yani ki C2H4. Now this is interesting in the way that both the carbon atoms have the same hybridization, but it's not sp3 anymore. Why is it not sp3? देखो, this is the ground state. Now out of this फिर से वही होता है कि excited state में, excited state is still this, but only 3 take part in bonding. This guy is extra. What does this do? This goes in p and forms a pi bond. These form sigma bonds, and we'll see now. This is when things get very interesting. Look at this. This is the unhybridized p orbital, and these are hybridized 3 sp2 orbitals, okay. तो excited और hybrid state यहाँ पे है और एक unhybridized orbital है. Now I'll give you a bit of theory and I actually show you. जब आप देखेंगे that's when you'll appreciate it, okay. So यहाँ पे कुछ लिखा है कि there'll be one sp2 sigma bond. हाँ, this makes sense, right? तो एक है ये sigma bond, that's what this is talking about. And एक pi bond है, मतलब ये एक हो गया, और the second one right here, this second one, right? This is your pi bond. The second bond is the pi bond. And बाकी बचे कौन से? बाकी बचे कौन से? Let me use a different color, third color here. तीसरा कलर लिया जाए. Tada! These are your sp2 sigma bonds. sp2s. S कौन सा? S हाइड्रोजन का, sp2 कार्बन का. चलो, बहुत थियोरी होगी, but let's look at it over here. Let's look at it over here. यार संदीप, let's not do time pass. Yeah, I have told you what you wanted to know. ठीक है? We are here to study. Let's study. ठीक है? Yes, Akshada, absolutely right. Absolutely right, Akshada. Double bond sp2. डम्बेल, हाँ वैष्णवी, वो सही शब्द आपने बोला, डम्बल तेरा उठाने वाले, डम्बल एंड डबल डम्बल, बट इसका शेप थोड़ा अलग है, राइट। नॉर्मल डम्बल इज अ डम्बल जिसमें दोनों तरफ इक्वल हो, बट sp2 या sp3 का थोड़ा लंबा हो जाता है। सी दिस इज sp3, sp2 वुड बी स्लाइटली शॉर्टर एंड देन sp वुड बी इवन शॉर्टर, ओके, स्मॉलर, छोटा हो जाता है। क्यों? बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। We'll do this bond length, bond strength वाली चीज अगले सेशन में, in the next sessions, but just to give a bit of an idea. So look at this beautiful, beautiful diagram to show all this. तो ये plane है, this is called the plane, okay, जिसमें हो रहा है हमारा, say if this is, let's call it the, कौन सा एक्सिस बुलाएं इसको, y ऊपर हो गया, ये z हो गया, तो इसको x एक्सिस बुला लेते हैं, let's say x axis, right? This is the x axis. ये ऊपर वाले को हम लोग बुला लेते हैं y axis, और ये वाले को हम लोग बोला लेते हैं z एक्सिस, ठीक है। तो यू सी कि x एक्सिस में हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड किसका, sp2 दोनों कार्बन का सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग अलोंग x एक्सिस। मैंने ऐसे ही भी बोला अगर x एक्सिस में है तो थियोरेटिकली, देन जो पाई ऑर्बिटल है वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब कि ये था x, ये हो गया y, देखो, और यहां पे हमने लिख दिया है उल्टा, वेरी नाइस। तो वी आर टेकिंग दिस एज y, लेट्स फ्लिप थिंग्स अप, इसको 2px बुला रहे हैं, ठीक है भाई, इसको 2px बुला लेते हैं, लेट्स चेंज इट, इसको x नहीं बुलाते हैं, इसको y बुला लेते हैं, ठीक है, और इसको बुलाते हैं x ठीक है, चेंज्ड, बिकॉज यहां लिखा, इन लोगों ने लिखा है 2px इन दिस फिगर, सो लेट्स कीप इट दैट। सो ये पाई ऑर्बिटल बना इधर, और ये हो गया सिग्मा ऑर्बिटल बीच में, ठीक है, कूल। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट्स गाइस? आर वी ऑल राइट? या
दिस इज हाउ बॉन्डिंग हैपेंस इन, अरे ये कलर बदल देते हैं तो लाइट ऑन लाइट हो गया ना, दिख नहीं रहा होगा, C2H4 यानी कि ईथीन। ओके, सो देर आर टू कार्बन एटम्स both of which are sp2 hybridized. ठीक है, the unhybridized p orbital that forms pi bond with sideways overlap. pi bond क्या होता है मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया है, एंड दिस इज द 3D वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, तो इस प्लेन में ये हो गया, और दूसरे प्लेन में there are new molecular orbitals being formed. You see that weird thing that happening, that like a banana kind of a thing. You see that? Yeah, it's whoop. That's really funky. So that's why you say that these electrons are kind of delocalized. They can move around from this one to the other. एक से दूसरे तक जा सकते हैं. And this again is the basis of a lot of bonds, a lot of reactions. All reactions actually inorganic. Same current. Last वाला है ethyne. Last in the sense हमारे for us to talk about right now. ठीक है. Ethyne क्या होता है? C2H2. Ethyne या फिर ethylene. Ethylene is different, I think. Let me think of that. Is ethylene the same as this or is it different? Medha? Okay, cool. Yeah. Hey, Royal. I know, yaar. YouTube, Baba ki jai. I'm going to say that every time anyone says like, because that's what they're doing. They're not giving us bandwidth for some reason. Khair. C2H2, again, ground state ye, excited state ye. Now, only these two take part in bonding and ye hain pi bond में जाएंगे, ये दोनों दोस्त जाएंगे pi bond में. तो I'll go over this quickly now. ठीक है, यहाँ पे sp sp सिग्मा बॉन्ड होगा, which is this sigma bond right here. Okay, and बाकी जो है ये सिग्मा बॉन्ड तो हो गया, और दूसरा और तीसरा जो होगा, these are going to be pi bonds, 2 p pi bonds. मतलब दोनों एक्सिस में अब बन जाएंगे pi bonds, और एक होगा बचा हुआ जो हुआ will be this guy right here, C triple bond C तो बन गया, and this bond is your sps sigma bond. ठीक है, so this shows a sigma bond, and look at that, you've got pi orbitals overlapping in both these axes, ये वाला axis और ये वाला axis भी देखो, whereas the sigma bond in this axis, कौन सा कलर यूज करें, ये वाला देखो, this is where sp and s का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, sp और s का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, and this weird thing over here is basically sp और sp का सिग्मा बॉन्ड. All right, चलो एक सवाल लेते हैं. Yes, ethylene is C2H2, मतलब which is ethyne itself. Thank you for that, Medha. एक सवाल करते हैं. Which type of overlapping is present in CH bonds in ethene molecule C2H4? What do you think? Just checking if आप लोग सो रहे हैं or if you're awake. We've just done this. Please let me know what you think. Please let me know what you think. This one's direct, right? Medha says A. Excellent work, Medha. Okay. Anybody else? What do you think? Let's try anyway. Medha says A. Okay. I'm going to agree with Medha and say that sahi jawab for $1 million. I don't think there is money out of this, but ठीक है. How sp2s? All dangling bonds are hydrogen atoms. ठीक है. ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड, मतलब दिस मस्ट बी, इसके एक कार्बन एटम. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस गाय एंड अ डिफरेंट कलर फॉर दिस गाय, ताकि इट इज वेरी क्लियर व्हाट इज व्हाट. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. ठीक है, तो वेदर आई काउंट दीज थ्री और आई काउंट दीज थ्री, either way the number of sigma bonds is 3. Okay, so since there are 3 sigma bonds, this is going to be sp2, and if this is sp2, okay, ठीक है, that is sorted. तो ये कार्बन हो गया sp2, ch, h is just going to be a regular s orbital, right? So this is the bonding that is going to happen. भाई ये थोड़ा अजीब सा बन गया, my bad. Artistic stuff is not my strong pursuit, as you can see. This is your carbon sp2 orbital and sp2 hybridized orbital, and this is your hydrogen ka s orbital.
ठीक है. सो दिस इज द आंसर टू दिस वन. ओके, हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओ वी हैव सम टाइम. ए होगा. यस शेख, एब्सोल्यूट. इट्स ओके, मेदा होता रहता है लाइफ में, चीजों को डील करना पड़ता है. वॉच इट नॉट लाइव, बाद में देख लेना आराम से, क्या फर्क पड़ता है लाइव हो ना लाइव हो. यू एक्सपीरियंस इट, सवाल आपने सॉल्व किए, बाकी से आराम से देख लेना, है ना. शेख, गुड वर्क शेख. माज, cool name bro. Maz, like there's a, I think there was a chocolate by that name. Anyway, khair. Let's look at hybridization involving d orbitals. We have around 10 more minutes. I think 10 minutes ज़्यादा इसकी जरूरत भी नहीं होगी इसमें करने के लिए. So, and but here's a huge star, right? This does not work. I mean, I'm telling you right now कि ये theory है. आप किसी भी अच्छे साइट पे जाएंगे, like chemistry stack exchange or any good textbook, it will tell you that it is not possible for these guys, you know, for any, this is not possible कि 3D और 4S जाके combine करेंगे, नहीं होता है, not possible. But at our level, everything else I'm going to say right now, we'll assume it is possible. I'm giving you a big disclaimer, नहीं होता है. D orbitals do not combine with p orbitals or s orbitals, नहीं होता है. But ठीक है, for the sake of NCERT and जो हमारे लेवल की थियोरी है उसके लिए we'll assume कि हो जाता है, ठीक है, and we'll talk about everything. Then असलियत क्या होती है? असलियत is found out experimentally, ठीक है. It is neither here nor there, somewhere बीच की बात है. I'm giving you a hint. If you want to know more, read it up on chemistry stack exchange. What to read up on? यही चीज ऊपर जो लिखा है ना नाम, hybridization involving d orbital, डालो, put this on Google, search and read if you want. खैर, so remember those things where we had 5, 6 and 7, right? 5, 6 and 7. What 5, 6 and 7? Electron pairs. Lone pair plus bond pair. Vesper theory हमने शुरू किया था. Trigonal bipyramidal like PCl5, PF5, BRF5. नहीं, ये अच्छा, this is an exception to the rule. ये वाला 7 नहीं है, ये वाला भी 6 है. 7 वाला मैंने हटा दिया शायद. 7 वाला will do later. That is sp3d3. ठीक है, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हाँ ये दोनों सेम है. These both are 6. Okay, you'll see that इसका shape and इसका shape थोड़ा अलग लिखा है. Yeah, we'll look at that later. But for now, are you able to see how SF6 that was octahedral is now given by some weird thing? It says कि 3p, 2d and s, they all combine to do this. We'll talk about how. sp3d, देखो, this is the reason why you don't have NF5 and NCl5. Why? NCERT में पूछेंगे, बोर्ड में पूछेंगे, why is it that you cannot form NF5 and NCl5? Because nitrogen does not have d orbitals is the answer. Phosphorus में है d orbital and that is what forms this. This BRF5 is थोड़ा अजीब है. We'll look at that later. Okay, ये हम लोग उसको बाद में देखेंगे. खैर, let's look at sp3 orbit hybridization first. PCl5, phosphorus का ground state है neon, followed by 5 electrons in its valence shell. कौन से 5 electron? 3s and 3p. So I'm going to look at 3s and 3p. इसमें से ये भाई साहब jump करते हैं यहाँ पे, and this jump is what is not practical. Okay, और you may say कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले ये इलेक्ट्रॉन जाता है फिर ये यहाँ पे आता है. We don't know यार, to be honest, we have no way of knowing कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है. In the end, what we know is कि भाई ये कंपाउंड बन जाता है. Because we know that ये कंपाउंड बन जाता है, we like we backtrack it. थोड़ा backtrack करके बोलते ये भी होता है, वो भी होता है. We make a lot of theory. This is one of those theories. ठीक है, तो with a bit of salt, ये समझो कि ये जंप कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे 3s और 3s 3d कैसे जाएगा? चला जाता है यार, अभी के लिए एट आवर लेवल समझ लो कि चला जाता है. ठीक है, असलियत इज अ लिटिल डिफरेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. ठीक है, ऑलराइट. सो यू हैव गॉट दिस होल थिंग. नाउ अभी देखो कितने हो गए? sp3d, यही है ये. दैट्स ऑल यार. और कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 + 3 + 1 मतलब 5. Hence, okay, great. It forms 5 bonded orbitals. You're done. You're sorted and done and dusted. Ta-da! This is what PCl5 looks like. ये स्ट्रक्चर आप बहुत समय से देख रहे हैं. From my third and second session, you've seen this in VSEPR and in VBT. ठीक है. एंगल क्या है? ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल. All this I've told you a lot of times before, so I'm quickly doing this right now. ठीक है. These are called equatorial bonds. ये वाले, this forms a plane. ऊपर नीचे वाले are called
एक्सियल बॉन्ड्स. ओके, एंड ये एंगल 180 है, तो बीच वाला एंगल हो गया ये 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे. ठीक है, कूल. एनी डाउट्स गाइस अबाउट sp3d? या हाँ, axial bond pairs suffer more repulsive interaction from the equatorial bond pairs. क्यों? क्योंकि हाँ, this is straightforward. No, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो hence this is worse than 120 degree. I have told you this right in the starting, and this is from JD Lee. कि देखो, repulsion of 120 degrees is less than repulsion of 90 degrees. यही मैं आपको पहले बताया था. Okay, that's the same line that's written over here. All right. So this geometry is known as trigonal bipyramidal, which is basically 5 electron pairs, and this can be lone pair plus bond pair. दोनों हो सकते हैं, ठीक है? Not necessarily just lone pair. So other examples of this BF3, sp3d. Look at this, and this is what is going to blow your mind away, right? Check this out. बहुत सही है. देखो SF4, XEF2. एक मिनट. This is bugging out a little bit, right? ये थोड़ा smooth नहीं है. 1 second. There you go. बोलते ही सीधा हो गया. ये सही है. स्मूथ नहीं बोला, तुरंत स्मूथ हो गया. Look at that animation. It's smooth now. Okay. SF4. अरे रुको. हाँ. SF4, XEF2 and XEOF2. इन तीनों का hybridization is sp3d, but the shapes are different. देखो ये है linear. A, Poonam, A, for the which one? Are you giving me the answer to the next one already? That's awesome, Poonam. एक second, हाँ. Let me just run this again because थोड़ा सा ये lag कर रहा था. ये भाई साहब हमारा presentation यानी कि PPT. I think it should be better right now. All right, sweet. Yeah. So ये है linear और ये है T shape XeOF2. अरे एक second. अगला सवाल ऑलरेडी दिख गया. हाँ, देखो, this is what? This is going to be T shape, exactly like ClF3. Same चीज है यहाँ पे. और SF4 again is going to be this same sp3d, but इसका shape अलग है. What shape is this, by the way, guys? What shape is this? This is seesaw shape. Again, we've done all this in detail. अगला सवाल. Among C, P, Cl and B, which of the following elements cannot exhibit sp3d state? Is that the answer Poonam was saying was A? Excellent work, Poonam. इतनी जल्दी आपने देख के मैंने ये सवाल दिखाया आपको 2 सेकंड के लिए, पूनम ने तुरंत दे दिया आंसर. अच्छा, बट होल्ड ऑन, पूनम, was it for this one or was it for the next one or the previous one? Sorry, we're out of time, so I'll call it a day on this question over here. लास्ट सवाल है, इसको खत्म करके हम लोग बंद करते हैं. कितने और स्लाइड्स बाकी? लेट मी जस्ट सी क्विकली. थोड़ा सा ये 2-3 मिनट और रुक जाओ. वील डू sp3d also. व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर होगा? इज इट A or is it something else? थोड़ा सोच के बताओ. Among carbon, phosphorus, chlorine and B यानी कि बोरॉन. बोरॉन थोड़ी ना होगा. बोरॉन, which of the following elements cannot exhibit sp3d hybridization state? Cannot. Maybe Poonam said it for the last one. इसके लिए तो नहीं बोला होगा, right? देखो, कार्बन तो नहीं देगा, okay? बोरॉन भी नहीं देगा. Both of these have access to d orbitals. कौन से d orbitals? 3d orbitals. Whereas C and B don't. So C and B जहां पे, which is option B, that should be the answer. Okay, this is your answer on this question. Let's quickly. इसका A है पूनम. अच्छा, मेधा says B. Okay, पूनम, do you understand why it should be B? मेधा, excellent work. Yeah, क्लोरीन में तो है D electrons ना, remember? और मैंने आपको अभी दिखाया था ClF3. In fact, it looks like this: Cl, blah, blah, and blah. And here you have, oops, sorry. देखो, ClF3, which is sp3d, है ना? It can form a compound. खैर, वैष्णवी, good job. B, yes, absolutely. सही है. चलो, let's quickly, although I know we're out of time. Do you have another session इसके बाद? शायद नहीं है ना इसके बाद सेशन आपका. I'll just take 2-3 more minutes, or maybe 5 minutes at best, and let's finish off sp3d2 also. ज्यादा मुश्किल नहीं है. सेम आइडिया है. सल्फर का एग्जांपल लेके समझते हैं. सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स. अभी देखो 6 कैसे. दिस इज सिमिलर टू ऑक्सीजन, राइट? Sulfur is very similar to oxygen in the sense that it has 6 electrons and it is p4 configuration. But how it's different is कि इसके पास है access to 3d orbitals. Hence, दो इलेक्ट्रॉन जो paired हैं, they jump one from p, one from d, and what you get are these beautiful orbitals: 1s, 3p, and 2d, all together giving you 6 hybridized orbitals. कौन से 6?
sp3d2. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. यू सी दिस. हाँ पूनम, या क्या करें. अच्छा पहले का ये था. ओके पूनम, ऑल राइट ऑल राइट. देखो 7 बजते ही सही हो गया बफरिंग. My conspiracy theory is true. It's not conspiracy. I'm serious. And while I was chatting with you, I did tell my folks who help out with the channel, the operations folks, everybody else, कि भाई please write a mail to Google. क्या है ये भाई? हर समय 6 बजे सेशन में ये होता है. I was just doing that right now. Let's see. Let's hope they fix it. खैर, तो you can see this very clearly. कि this is the way sp3d2 looks like. ठीक है? This is the same as octahedral shape वाली चीज. Okay? चलो. Now sp3d2 hybridization में है ना, all of these bond lengths are identical. ये axial equatorial concept ही नहीं है, उसमें axial bond lengths were more. Okay, in the case of sp3d2 axial थोड़ा लंबा था, equatorial थोड़ा कम था, right? खैर, other example of sp3d2 looks very funny, is just a pyramidal, right? Yeah, square pyramidal. This is XeOF4 और XeF4 क्या है? This is square planar and this is square pyramidal. Why square pyramidal? क्योंकि देखो, you remember H3O plus, अगर ये है O और ये H और H, this was pyramidal. तो normally pyramid, जैसे कि pyramid है of Giza or whatever else, right? Pyramid का you say has a triangular base. अगर pyramid का बना दिया square base, then you call it square pyramidal. That's why ये है square pyramidal. XeOF4, XeOF4 is square pyramidal. XeF4 is simply square planar. I don't know वहां पे E कैसे आ गया. ठीक है. So here is a summary of everything we have done so far. Last वाला bit मैंने explain नहीं किया in detail, but let's just take it as a statement of fact. ठीक है, कि pentagonal bipyramidal भी होता है sp3d3. This is not in your syllabus, NCERT में है ही नहीं, but IF7 is an example for this. If you want to read up on this, you can read up. ठीक है, cool. एक लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद I'll give you some homework questions. Yeah, एक लास्ट सवाल देखते हैं. Which of the following is the correct set with respect to molecules, hybridization and shape? Molecule, hybridization और shape. ये वाला ट्राई करना है, shall I solve it for you? Try it out. लास्ट सवाल है, ट्राई करो. We are done for the day. होमवर्क सवाल आएंगे इसके बाद. ट्राई करो. Please try this out. Yeah, so it's trying to say कि देखो, what you have got here, right? This whole BeCl2, is it sp2 and linear? और linear कैसे होगा? sp2 and linear doesn't make sense, no. It will be sp and linear, है ना? ये वाला तो नहीं है. वैसे ही बाकी देख के बताओ. What do you think? What do you think the answer to this one is going to be? बताइए, क्या लगता है आपको? So let's look at the next one. A, Tanushri. Hey Tanushri, long time, huh? Tanushri saying A, but Tanushri मैंने अभी जो बताया कि एक नहीं है. BCl2 is sp. क्यों? क्योंकि इसके हैं just 2 bonds, 2 sigma bonds. If it's forming 2 bonds, it has 2 orbitals. sp यानी कि 2 orbitals. ठीक है. BCl2 sp, again wrong. BCl3, yes, this looks right. This looks right to me. क्योंकि इसमें 3 orbitals. Okay, okay. What about BCl3 sp3? ये गलत है. तो you don't even have to look at the third thing. मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये जो शेप की जरूरत नहीं है, बस मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन फिगर आउट कर सकते हो. क्यों? मॉलिक्यूल में फिगर आउट करोगे कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स. इसमें है 2, इसमें है 2. सो लेट मी राइट पुट अ कॉलम हियर सेइंग सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? सिग्मा बॉन्ड इसके हैं 2, इसके हैं 2, इसके हैं 3, इसके हैं 3. तो मतलब कि ये होंगे sp2, sp2, sp और sp. तो just based on this, you eliminate this, and there's only one that makes sense, है ना? C is the answer. Yes, Medha and Poonam. Excellent work. Brilliant stuff. We're going to make fascinating doctors, each and every one of you. Homework questions, 2 आ रहे हैं up for you. Choose the correct statement regarding ethyne. कितने हैं सिग्मा पाई? हाइब्रिडाइजेशन की बात है, sp sp2. ठीक है, ट्राई करो, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा. And last question is this right here. In the hydrocarbon, blah, 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 blah. करो. State of hybridization of carbon 1, 3 and 5. Carbon 1, 3 and 5 का hybridization क्या है कार्बन का?
देखो एक कंपाउंड में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकते हैं कंपाउंड के, राइट? दिस इज व्हाट होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट. चलो आई एम डन फॉर द डे. आई नो बफरिंग की इश्यूज थे, बट सेशन तो अच्छा था, मजा तो आया, राइट? द कंटेंट इज प्रीटी अमेजिंग, यू गॉट टू एडमिट इट. And if you like it, please share it with your friends and subscribe to this channel would be great. I know a lot of you are watching this not live. And by the way, जो आप लोग not live देख रहे हैं, people are not watching it live. Even if you guys feel there's buffering, then बताना, right? That will be an interesting thing. I don't think that should be the case because I have checked every time जब भी आप लोग बोल रहे buffering होती है, हर समय में जाके बाद में check किया. And I figured the only common thing was कि इस समय YouTube बाबा कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं. खैर, we'll write an email to them, but keep giving us feedback like this so we'll make things better for you. चलो, I will see you again on Thursday for NEET sessions. हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे. कार्बन chemical bonding part 6. Yeah, please check out these homework questions. Okay. All right. Bye. Good night. Medha, excellent work. Excellent work. Please बाकी भी आप देख लीजिएगा. Hey Vedant, what's up? Late, but अच्छा है कि आप यहाँ पे दिखे. Medha is saying see. Lovely, lovely, lovely. चलो मिलते हैं थर्सडे को. You're all amazing. Yeah. Bye. Good night.